fifth semester automobile. Before we have discussed about the ignition system. Today we have discussed about the battery ignition system. Before going to battery ignition system, we should know about the different components of battery ignition system. The first one is battery, second one is ignition system, third one is induction coil or ignition coil, then distributor, spark plug, and the other half means condenser, contact breaker point, cam, and finally earth. In battery ignition system, these are the different components. If we discuss about the separate components of or each components of battery ignition system, then totally conclude the battery ignition system. In previous class, you know about the ignition system means function of ignition system. Battery, the first component of battery ignition system is battery. Battery, in previous chapter you should know, but today we have short tell about the battery. Battery is a electrochemical device. Battery is a electrochemical device which convert chemical energy into electrical energy during charging and discharging, or we can say that vice versa. To know the function of battery, then come to ignition switch. Ignition switch, which is only off and on the ignition system. Then the next component is induction coil. Induction coil, or we can say that ignition coil. Induction coil is a simply transformer. Ignition coil or induction coil is a simply transformer with certain characteristic, that is, it converts the relatively low battery voltage to high battery voltage. Induction coil is a simply transformer which step up the voltage, means voltage টা তোমার কোন হবো না increase করে. Induction coil have two winding. The induction coil have two winding. One is primary winding and the second one is secondary winding. The primary winding and the secondary winding. The primary winding consists of 200 to 300 turn of thin copper wire, whereas the secondary winding have 15,000 to 20,000 ton of thin copper wire.
Now see that how the induction coil or ignition coil केमिति तमर कौन करूची वोल्टेज टा स्टेप अप करूची. This is the primary winding and this is the secondary winding. This is the numbers of turn of thin copper wire. This is the number of turn in thin copper wire. Now we see how the induction coil is stepped up the voltage. We know that about the formula N1 by V1 equal to N2 by V2. N1 is the number of turn in the primary winding. N2, this is the number of turn in secondary winding. V1 is the input voltage. V2 equal to the output voltage. Now we can calculate. We have to know the number of turns in primary winding. We can say this is 200 turn of thin copper wire. N2 means the number of turn in the secondary winding. This is known as 15,000 turn. V1, which is the input voltage, we can say that this is 12 volt, and we have find out or calculate the V2. N1 equal to N1 by V1 equal to N2 by V2. N1 equal to 200 turn of thin copper wire, whereas V1 this is known as 12 volt. N2 we know this is 15,000 divided by V2. Now where cross multiply, then 200 V2 equal to 15,000 into 12. Imply that V2 equal to 15,000 into 12 by 200. Then the output voltage is 900 volt. We give the input voltage is 12 volt, but this output voltage is 9,000 volt. Sorry, 900 volts. आमे सिंपली आमे कौन करू 12 volt रा बैटरी देलु जोटा पे हमर रहले हाउस कोन V1 into V2 output voltage आमे पाइलु नोट से पाइलु सेही बारे कौन कहू ना इंडक्शन कॉइल और ignition coil is a simply transformer which is step up the voltage. You know how the voltage is increased,
Then the next components of battery ignition system is condenser. Condenser is used to absorb. Condenser is used to absorb the excess amount of energy during braking period and give the share in the braking period. This is the condenser. The function of condenser are to minimize the arcing. এইটা হলো না কন্টাক্ট ব্রেকর পয়েন্ট যেটা তোমার কোন হচ্ছে না কন্টাক্ট ব্রেকর টু পয়েন্টস আর কম contact with each other, then at this time this sparking occur. To minimize the arcing and pitting of the contact breaker points. And the second function of condenser is to intensify the spark. Okay, then the next component of battery ignition system is contact breaker point. This contact breaker point is a weaker member of the ignition system. The function of contact breaker point is the contact breaker point is a mechanism. The contact breaker point is a mechanism which make and break the primary circuit of the ignition system for obtaining high voltage in the secondary winding. যেତେବେଳେ আমরা কোন করছি এই কন্টাক্ট ব্রেকর পয়েন্টটা যেটা টচ করছি এই ব্যাটারি ইগনিশন সিস্টেম কোন করছি দুই ভাগে করা হয়েছে গোটে হচ্ছে তোমার কোন হচ্ছে ব্যাটারি ইগনিশন সুইচ ইন্ডাকশন কয়েল condenser, contact breaker point, then ground or arc. And the second is battery, induction coil, secondary winding, distributor, then spark plug to ground or arc. Now, contact breaker point is a mechanism which make and break the primary circuit of the ignition system for obtaining high voltage in the secondary winding. The contact breaker is a weaker member of the ignition system. The contact breaker point is a weaker member of the ignition system. Therefore, the contact breaker point should have the following characteristic. The contact breaker point should have the following characteristic. कौन होची the contact point should be open and closed without bounds. There should not be oxidizer. There should not produce any noise. The contact must be come with contact without any bounce, means
this point যেতବେଳେ তোমরা কোন করছন্তি না কন্টাক্ট ব্রেকর পয়েন্ট র দুইটা পয়েন্ট যেতବେଳେ কোন হচ্ছন্তি না কম টু ইচ আদার or যেতବେଳେ তোমরা কোন হচ্ছন্তি না দুইটা কন্টাক্ট পয়েন্ট হচ্ছে কোন যেতବେଳେ টচ হচ্ছন্তি সেতବେଳେ কোন হবো না কোনসি বাউন্স হবো নাহি। This is the characteristic of contact breaker point. The contact breaker point is a weaker member of the ignition system because the contact breaker point is made up of plastic, means heel, bush, pivot. You should know about the reverse glass. Okay, you should know about the components or parts of contact breaker points. And the contact breaker point is operated with the Engg shaft. The contact breaker point is operated with the help of cable, which is directly or indirectly connected to the technology. Directly or indirectly connected to the distributor shaft. And the next component of battery ignition system is distributor. Distributor means distribute. गोटे जगह जो करंट आसिला से कोन करबो डिस्ट्रीब्यूट करबो टू द प्रॉपर स्पार्क प्लग at according to the firing order. So distributor which is used to distribute the high tension current to high tension current to the proper spark plug at correct timing. It should open or close the circuit between the battery. It should open and close the circuit between the battery and the ignition coil. से कोन करबो जेते बेले कोन करा होची ना डिस्ट्रीब्यूटर रे तमर जो डिस्ट्रीब्यूटर रो तमर होची कोन रोटरटा ई रोटरटा कोन होची ना मूवमेंट करूची जेते बेले जो लूप से टच करिवो पार्टिकुलरली सेही लूप रे कोन होची जो पॉइंट थिबो पार्टिकुलरली सेही स्पार्क प्लग से कोन करबो फायरिंग करिवो बट ड्यूरिंग दिस गैप से कोन करछन्ती ना क्लोज करछन्ती कोन ओपन आउ क्लोज करछि जेते बेले कोन करा होछि ভিডি होछि ओपन होछि এই 1 2 रे टू गैप पोजीशन रे क्लोज पोजीशन तेणु से कोन करछि बैटरी आउ ignition सिस्टम भितर से कोन करछि ओपन आउ क्लोज करछि बुझियला क्लियरली एति भितर कार कोन डाउट अछि करे ओके देन the last component of battery ignition is spark plug. Spark plug. What is the function of spark plug? Now, spark plug is a device. Spark plug is a device to produce the spark. Spark plug is a device to produce the spark to ignite the air fuel mixture by means of spark to ignite the air fuel mixture by means of spark jumping between their electrodes. This is the spark plug gate and this is the central electrode
This is the side electrode or ground electrode, or we can say that arc electrode. Arc electrode. A spark plug is a device which is used to ignite the air-fuel mixture by means of spark jumping between their electrodes. This is the spark plug gap. Now the question is, what do you mean by spark plug gap? The distance between central electrode to side electrode or arc electrode or ground electrode is known as spark plug gap. If this gap is not there, then the air-fuel mixture cannot be get ignited. A spark plug gap must be needed for a vehicle. Without the gap, no spark occurs. Now, the question arises whenever spark occurs. When the current passes through an air gap, a spark occurs. That's why this gap is required. Okay, then know about the function of battery. What is the function of ignition switch, induction coil, distributor, condenser, contactor point, and spark plug? All these components are assembled together, then the battery ignition system complete. Okay. In previous semester examination, question arises, and this is the very important question for ignition system. Question is, write a sketch about the battery ignition system. You should first draw this diagram. You should first draw this diagram. Then these components are assembled and write down the function. Okay. Then write down the each component of the function. And lastly, you answer all the battery ignition system. Now, how can you write the battery ignition system? First, तुम्हें कौन करिवो जो डायग्राम टा करछि पार्टिकुलर ए भलिया तुम्हें कौन करिवो लाइन डायग्राम टी करिवो करि सल्ला परे कौन करिवो सब कंपोनेंट्स गुडा गोटे परे गोटे मेंशन करिवो मेंशन करि सल्ला परे कौन करिवो एरो मार्क दे कि तुम्हें कौन करिवो गोटे परे गोटे सीक्वेंसली लिखि चलिवो फर्स्ट कौन कहि दउछि मु लाइन डायग्राम कसला कौन करिवो लिखिबो this figure shows the line diagram of battery ignition system. केमते लिखिबो क्लियरली जानि पाछो तो फर्स्ट तमे कोन करिवो बैटरी ignition system लाइन डायग्राम करिवो जोटा को लिखिजो जो कंपोनेंट लिखिजो ताकि पूरा को कोन करिवो गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप लिखि जिवो
लाइट डायग्राम कर देला तुमको कोन होबो आराम से क्लियरली तुमको मेंशन हे जबो कहा परे कोटा को मोर लिखिबार अछि एंड फाइनली लेखा सरी दिबो तमरो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कोन हेतबो कंप्लीट हे जाइथिबो ठीक अछि तो फर्स्ट कोन करलो दिस फिगर शोस द लाइन डायग्राम ऑफ बैटरी ignition system the second part the battery ignition system consists of battery ignition switch induction coil condenser contact breaker point distributor then spark plug जानि बच्चों केमति लिखिबो हबो ना नहीं लेखि साला पर कोन करबो दुई भाग रे व्यक्त करबो गोटा होची प्राइमरी इग्निशन सिस्टम स्टार्ट होची आ गोटा कोन होची ना एंड होची द प्राइमरी इग्निशन सर्किट started battery कोटा रे मोची रे बाबा बैटरी the primary ignition system started battery and passes through कहा कहा लेके जाउची फिगर देखिबा सेंसर में लिखिबा started battery passing through ignition switch induction coil condenser contact breaker point then earth हबो फिगर देखि बाबा जानि पाछो ना नहीं क्लियरली जानि पाछो तो अच्छा ठीक अछि से प्राइमरी जो ignition system रहिला सेठी जो induction coil means the primary winding which is small torn of thin copper wire सरी गला पुणी देखिबा त ये गुटे प्रश्न बनिगला एंड एइटा गुटे तमर प्रश्न रहिला गुटे प्राइमरी गुटे गो सेकेंडरी जेतबेला तमर कोन कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट आईडी कोन होची क्लोज होची तेनो प्राइमरी वायरिंग रे कोन होची करंट फ्लो होची क्लियरली बुझी पारजो जेतबेला तमर कोन होची बैटरी इग्निशन सिस्टम कोला ऑन हला सेटा कोन होची ना प्राइमरी इग्निशन सिस्टम रे तमर कोन करा होची ना करंट फ्लो होची जेतबेला कोन करा होची ए कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट कोन होची कॉन्टैक्ट ली होची मिसी होची सेटा कोन होची ना मिसी होची सेटा कोन होची तमर करंट फ्लो होची जेतबेला कोन करा होची ड्यू टू दिस ऑपरेशन ऑफ द कैम तने ये कोन होची जो कॉन्टैक्ट है से कोन हो बता ओपन है तो जो ओपन होची एई सर्किट रे प्राइमरी वायरिंग कोन ला करंट फ्लो होइला एतले का नहीं जति हेइतिला तले कोन होची जेतबेला से कोन करा होची ना ओपन होची तने एई एकरा लोगे आयरन रड वो तापरे कॉपर वायर कनेक्टर में टर्न करथु सेटा कोन करा होची ना हमर गोटे करंट फ्लो होची कोन होची ना गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची जो मैग्नेटिक फील्ड के तमने कोन ला क्रिएट हेतिला जेतरा से ओपन होची तन से कोन कि सडनली से कोन होची सेकेंडरी वाइंडिंग कोन होची जंप होची जो सेकेंडरी वाइंडिंग कोन होची more than number of turns in the primary winding को सेकेंड वाइंडिंग को जो नंबर ऑफ टर्न्स कोन करा छी इंक्रीज करा छी जेतबेला जो करंट फ्लो ला जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हेतिला से कोन करबो सेकेंडरी वाइंडिंग से कोन करबो जंप पोजीशन पर कोन होबो से डिस्ट्रीब्यूटर रखिबो डिस्ट्रीब्यूटर काम कोन करछि ना से प्रॉपर जो करंट थिला ताको कोन करबो जो लूप से मिसिबो मतलब करंट आसी रहैनी बतल ये कोन करछि रोटरटा रोटेशन करछन्ती एमे रोटेशन होछि जो लूप से लागिबो सेही स्पार्क प्लग रे कोन होबो एकी स्पार्किंग होबो त एई जिस जो बुझुछि तले जो लूप से लागिबो पार्टिकुलर सेही स्पार्क प्लग रे कोन करबो से एकी स्पार्किंग करिबो क्लियरली बुझियला कारण ए जो देखुछो डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट कंडेंसर इंडक्शन कॉइल इंडक्शन स्विच बैटरी these are the different components of battery ignition system सबो गुडारो टिके फंक्शन जदि हम टिके लिखि देबो ताले तमे कोन होबो ना बैटरी ignition system कंप्लीट हे जो ओके
Thank you.